my beautiful people, and welcome back to another video. It's been quite some time since I posted a video. I think it's been a month. But today's video is going to be very different from the previous videos that I've posted earlier on, because a lot of things that happened recently and it made me realize to touch the ground reality and just be more present and share what's happening with me and all of the things that have been going on. So it's, I don't know, I don't want to be emotional, तो वो मैं नहीं होंगी, but the reason that I started YouTube was to express myself, and I think I lost it in the way somewhere, but this is what I'm going to be talking about, so hang on to it. There's a lot, and I think you'll get to know me personally as well, because abhi tak I think part of me was always well kept. So I think let's go. So I think I recently shared in my previous video that I got a job and everything, and I'm really grateful for that. But a lot of things have also happened, I think parallel okay, I don't know. I don't know how to frame it, but it's been only around like 13 to 14 days since I got to know that my granddad, my Abba, passed away. And the reason that I'm mentioning this in this video is because he loved watching my YouTube channels. He loved my creativity and the way I would express myself honestly, and that's why I'm sharing what I feel for him through this video. So it's kind of like what I would reflect on. So I don't know where to begin. मैंने कभी ऐसे बोला नहीं है on camera ये सब के बारे में, तो especially, which is very personal to me. But I think I'm gathering up all the courage to speak about it, because all I can remember is when I was younger, I think those people who know me from my school days or anything from my younger days, they know that I used to express myself a lot. Whatever it would be, I would just speak clearly on camera, very open and wide about it. But then jab se, you know, people had like a lot of tippaniya and everything on every comment. So I think on every notion that people would speak on, then my insecurities kind of grew and I shut off the, I don't know, what is it, my personal side of my life to one corner. But this has given me courage to speak about it, because why not? I mean, it's my channel, and I think the people who are here with me, who are watching the video, I think they have also gone through some of these things in their lives, and मुझे रियल रहना है, अभी हो गया अभी बहुत सारा एजुकेटिव कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैंने काफ़ी ज़्यादा शेयर किया है, तो अब थोड़ा सा पर्सनल साइड भी शेयर करने का बनता है मेरा. सो उस पर भी आएंगे, दैट इज़ अनदर थिंग. बट फॉर माई आबा, आई जस्ट कैनॉट थैंक हिम इनफ कि उन्होंने जितना कुछ मुझे सिखाया है. If a lot of you guys don't know, I am a writer, I'm an author as well, and I have published 2 books. So ये जो writer होने का जो thing है ये मुझे आबा से good genes में pass on हुआ है. So because he is an amazing writer, he used to write like all the time, and उनके जो cute सी शायरी उनके टाइम पे तो सब कुछ हिंदी में, एकदम शुद्ध हिंदी में रहता है, तो सब कुछ इतना प्यारा लिखते थे वो, एंड मेरी आजी के लिए लिखते थे स्पेशली. सो बिग रोमांटिक एट हार्ट. सो आई मिस हिम, एंड आई थिंक जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जो दुख होता है ना जब तुम घर नहीं जा पाते हो, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर. सो आई थिंक it's the most
painful, gut-wrenching experience when you cannot travel to your home. अब इस पे बहुत सारे लोगों के ओपिनियन होते हैं कि घर से दूरी मत जाओ, तो ये कभी सिचुएशन आएगी ही नहीं. बट ऑन दैट व्हाट आई फील इज कि आई डोंट नो फॉर एवरीबडी, आई डोंट स्पीक फॉर एवरीबडी, बट देन व्हाट माई लाइफ, व्हाट माई एक्सपीरियंसेस, व्हाट माई फैमिली हैज टॉट मी, उस एक्सपीरियंस से मैं बोलूँगी. सो स्पेशली फॉर आबा, वो जितना प्राउड फील करते हैं कि मैं इतना दूर आई, मैंने यहाँ पे आके अपनी पूरी लाइफ बनाई. सेम गोज फॉर माई होल फैमिली. सो आई डोंट थिंक कि एट एनी पॉइंट आई वुड रिग्रेट माई डिसीजन टू कम हियर. बट देन जो प्रॉब्लम्स होती है इमोशनली फेस करना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है when you just cannot go home. एंड वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही अपसेटिंग था. और आई जस्ट हैड लाइक 1 or 2 people who had my back because I don't know. मैंने एक्सपेक्ट तो किया था बाकी कुछ लोगों से, बट नहीं हुआ वो. एंड आई डोंट नो कि क्या मुझे वो चीज़ के बारे में बोलना भी चाहिए कि नहीं, पर बुरा लगा, बहुत बुरा लगा. बट ये सब चीज़ों में ना तुम्हें ये वैल्यू समझ में आती है कि हु आर द पीपल हु आर एक्चुअली caring about you, who are actually real. बट जो मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि हाँ ये बंदा ये बंदी रियल हो सकते, ये लोग रहेंगे मेरे साथ, बिकॉज ऑफ द वर्ड्स ऑफ द प्रोमिसेस दैट वर मेड. बट some promises are not fulfilled sometimes. So the only thing is that I needed my friends, but it's okay. At least I had like 1 or 2, so I'm grateful about them all the time. Because वो नहीं होते तो I don't think मैं यहाँ पे survive कर पाती इस time पे, because I don't want to get emotional or cry. I have set up my mind कि नहीं रोना है. But yeah, I'm at a loss of words. I don't know how to explain this. I just miss him a lot, really a lot. And I'm very thankful to my co-workers, to the family that I've created at my workplace. I don't think कोई इतना understanding होगा जितना उन्होंने मुझे संभाला, समझाया. They gave me the time and space because they knew that all of my situations which were happening, the reason that I could not go home because flights ही available नहीं थी, and the flights which were available were around 2 lakhs. So it's just an impossible situation. It is. So I'm very thankful कि at least उतना मुझे space मिला to process my emotions. But it just made me realize कि बाहर रहना is not easy at all when it comes to your loved ones. And I'll just say, like, every student who's living in a different country, they're doing amazing, really amazing. It takes a lot of guts. So जितने भी लोग यहाँ आने वाले हो, I just want to say that you're going to do an amazing job here. So just keep at it. And yeah, moving forward to what else? I'm going to reveal everything today because I'm done with not expressing myself, because content is not just for me to blatantly put out information and everything and be done with it. मुझे express करना है, मुझे real रहना है. So another thing that was happening all this time was my PCOD. So I don't know if a lot of you guys are aware of the polycystic ovary disorder. So I have that for quite some time now,
and it has been very difficult for me to keep up with my health because of all the stress that has been going on, and stress is one of the main reasons to contribute to PCOD. So that has been going on as well. I'm trying my best to follow a good healthy diet and everything, so we're working at it, I think. Yeah. And what else? So another thing that has happened, I think ये तो काफ़ी generic बात है, but ये अभी recently हुआ है, and I have been terrified, like literally terrified of my life for the first time. So there have been riots going on in UK, which are against the immigrants who have come here. So I think you'll get the whole story when you go and research about it. So basically, a 17-year-old who was a migrant who actually murdered, I think, 3 young children who were British. So उनके लिए, उनके डिफेंस के लिए, उनके ऑनर के लिए ये प्रोटेस्ट, ये राइट्स चल रहे हैं all over the UK right now. I think it's all over the news as well, which is very terrifying because definitely the reason that they're standing up to is very great. They should. But जो एक खौफ आ गया ना अंदर, because I've never felt so intimidated for being a person of color, and वो situation काफ़ी अभी horrifying हो गई है. So it's just about the incident that happened yesterday. I went out for some stuff, and एकदम से मेरे friends ऐसे हमने बोला कि let's just stay in the shop for some time. So हम Costa में जाके बैठ गए. For the first time in my life, I saw like 100 से 200 लोग जो भाग रहे हैं. Everybody was wearing some balaclavas or something, कुछ तो बोलते हैं उसको, and पूरे ऐसे black में dressed up, and all young people, everybody young, around 14, 12-year-olds, everybody, and they were running like a mob. And जो वो situation थी देख के मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी. I have never ever felt like that in my life. And even जो कोस्टा का जो वो ओनर था, जो भी था, उसने डोर भी क्लोज कर दिए थे so that nobody could get inside because they were creating a whole big scene. And if you will check on the news, you'll get to know कि क्या हो रहा है अभी UK में. So it's not safe for any person of color right now. तो वो भी situation चल रही है, and I just like I can't even believe कि इतना सब कुछ हो रहा है अभी in just a span of 1 month. So that is what has been going on. मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकल रही हूँ. मैं भी रिस्क नहीं ले सकती इसका. But yes, that has been going on. So moving on to another thing that I wanted to share with you, since इतना सब कुछ मैंने बता दिया है. I am going to express myself more on camera. I'm going to make my content more personalized so that you guys get to know me and I can share what I actually feel. तो अभी तक जो educative, informative content आ रहा था वो भी आएगा, but now we're also shifting to a whole new genre of lifestyle, and I'm going to share bits and pieces of my life जो भी होता रहेगा. I'm very excited to share that, and yeah, उसके लिए एक और मेरे पास announcement है which I'm going to share with you in a moment. So जो announcement है, you can already see him in the term of announcement. So the good, जहाँ आते हैं खबर बन जाती है. introduce करा दूँ तुझे अब? अरे उन्हें भी पता है, बार बार आ जाता है. So the announcement is that we're adding a new addition to our YouTube channel,
So now it's gonna be Nandini and Nihit. And we're gonna post a lot of content now. So जो content variation है काफ़ी ज़्यादा होगा, diverse होगा. So not only we will do informative, educative content for students coming to UK, but also at the same time lifestyle of living in UK, and also थोड़ी मस्ती, थोड़ा खुद का trips, vlog अलग अलग जगह journeys. जा घूमना हाँ. और थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, या फिर कुछ भी छोटी मोटी एक्टिविटीज हो गई, या कुछ भी गेम्स वगैरह, जो भी हम फन करेंगे, लविंग बेसिकली. जो भी हम करेंगे अब हम ऑनेस्ट रियल होके करने वाले हैं. बिकॉज हमने सोचा कि व्हाई नॉट जस्ट शेयर व्हाट आवर जर्नी इज, द अप्स एंड डाउन्स एंड एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग थ्रू. सो दैट वाज आवर मोटिव बिहाइंड दिस. एंड आई रियली होप कि अब जो मतलब वी रियली होप ओके, दैट्स व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर. वी रियली होप आदत बदल ले. अभी भी हो. we really hope that you really like our content, आपको मज़ा आए, and you stay with us through the whole journey, because वो तभी I think fun होता है when you all of us go together. बिल्कुल. Something like that. और मज़ा तो तभी आता है ना जब हम आपके कमेंट्स पढ़ें, पता चले कि आप क्या सोचते हो, कैसा जानना चाहते हो, एंड देन हम रिप्लाई करते हैं उन बातों का और उसको वीडियोस में बना दिया कुछ ऐसा. कितना उसका फॉर्मल अलग ही- हो रहा है ये, कितना इसको अलग खुशी है अभी कि ये इसका यूट्यूब अब चालू हो रहा है जर्नी. मैं अंदर ही अंदर से थोड़ा मैं खुश हो रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पता नहीं है ना एड्रेस कैसे करते हैं. हे यो गाइस, दिस इज योर यूट्यूब चैनल. इतना क्रिंज प्रो मैक्स है, क्रिंज प्रो मैक्स के यार लोगों का जो देखा है मैं तो वही बोल रहा नहीं, हूँ. हमें वो नहीं करना है. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोगों को और किसी चीज के लिए रेडी हो या ना हो, शी नोज व्हाट्स कमिंग. बी रेडी मेरे- फॉर हिज जोक्स. मेरे गंदे His जोक्स. dad jokes are the ये तूने डैड जोक्स के लिए एग्री नहीं कर रहा था पिछली बार, तो बोला उससे भी ज्यादा खराब. इससे भी ज्यादा खराब है क्योंकि, और मुझे यार तो इतना भी आदत हो रही है अभी. खराब नहीं हो सकता कोई जोक मेरे ख्याल से. और अगर इन्हें लग रहा है कि और भी खराब है तो क्या पता इनके ह्यूमर कोई ट्यूमर हो. This is what Let's just this is what we were talking about. इसको कट करो. ये कट करो. पर सही है ना. बट जो भी है वी जस्ट प्लानिंग कि हम जितना हो सके उतना एक्टिव रहे. एंड क्योंकि अभी तक काफ़ी सारा व्हाट आई मेंशन्ड अर्लियर ऑन हैज़ बीन गोइंग ऑन, बट व्हाट आई फील इज नाउ इट्स टाइम टू टेक इट इन अ पॉजिटिव नॉच एंड go ahead and do things that are मुझे word ही नहीं मिल रहा है. Fun and real. That's what it is about. इसीलिए ये एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी मैं जोन आउट हो जाती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता है मैं क्या बोल रही हूँ, तो फिर ये कंप्लीट कर देता है. मैं fill in the blanks के लिए आया हूँ. यार नहीं. अरे इसका वो क्या होता है, वो कर दो. रेडी मूवी में कहता है ना वो उसका पापा. अरे इसका ये नहीं, इसका वो. anyway वो लोग छोड़ देंगे. बोले कि यार अब क्या क्या सहना पड़ेगा. बट यस, तो ये मेन मोटिव था बताने का. दिस वॉज द बिग अनाउंसमेंट दैट वी वांटेड टू शेयर विद यू गाइस, दैट वी आर एक्सपैंडिंग द चैनल, वी आर गेटिंग मोर कंटेंट फॉर यू एंड वी आर गोना स्टे मोर एक्टिव नाउ. सो वी रियली होप कि यू स्टे विद अस एंड जितनी भी हमारी जर्नी हो रही है अब आने वाली, जितना भी जो होने वाला है, यू स्टे विद अस, यू एन्जॉय, एंड जितने भी हमारे अप्स एंड डाउन्स है वी विल शेयर विद यू कॉन्स्टेंटली, बिकॉज वी जस्ट फील दैट इट्स टाइम टू जस्ट बी ऑनेस्ट कि क्या चल रहा है. एंड लाइक बहुत ही सटल वे में, डायरेक्ट, सच, एंड यू वुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन And just like- around. just like express our parts of ourselves, कि how we are, how our lives are going, because that is the main purpose for our Yeah. channel now, कि just share what we are. Yeah. कि किधर से as- किधर तक आए, Yeah, कैसे आए, क्यों Simple. आए. very Yeah. simple thing. So we really hope कि next videos में you like it, and please let us know right now in the comments if you have any ideas कि what type of content you want to see,
क्या देखना चाहते हो, anything that you want, we'll try to cover it up. But I think this was the positive, I think, beginning right now कि अब न्यू चैप्टर चालू होने वाला है इस चैनल का. And I hope that you guys stay with us, please. Yes. So on that note, let's end this video. We hope to see you very soon. Until then, take care, stay safe. Bye. Bye.